चाइना को हम ये कहते हैं, भाई जियो और जीने दो, वरना आप अगर हमें जीने नहीं देंगे तो गलवान में जैसे हमारे शहीदों ने अपनी जान दे दी, राइट, तो हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे ना। तो चाइना को बार बार भारत का ये मैसेज है, जियो और जीने दो, वरना अब जैसे यांगसी में भी हुआ, ठीक है अगर शांति चल रही थी, बट अगर चाइनीज सोल्जर्स आए, उन्होंने घुसपैठ करी, तो फिर भारत तो उसको रिएक्ट करेगा ना। आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम आपको कैसे जीने देंगे। देखिए ये जो अभी इंसिडेंट हुआ है डेफिनेटली गलवान के बाद हुआ है। अब क्यों हुआ है, इसके कई कारण भी हो सकते हैं। एक बेसिक कारण तो ये है कि इनोसेंटली उनका पेट्रोल और हमारे पेट्रोल आपस में भिड़ गए, राइट, सबसे सिंपल कहने को। बट बात यह कि अभी चाइना में इनकी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस समाप्त हुई है, जिसमें शी जिनपिंग अब तीसरी बार अपनी टर्म में फिर से आ गए हैं, और चाइना के अंदर भी अनरेस्ट चल रहा है। तो ये एक टैक्टिक हो सकती है चाइना की अपने देश के अंदर का अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम देखिए चाइना तो समझता है कि भारत की इकोनॉमी और भारत की मिलिट्री की क्षमता ना बढ़े, चाइना का सारा प्रयास है पिछले कुछ वक्त से, स्पेशली आई थिंक क्योंकि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी में इनकी री इलेक्शन होनी थी उसके चलते, और ताइवान पे ज़्यादा फोकस चल रहा था, उसके चलते शायद चाइना ने अपनी कुछ गतिविधियों पे रोक लगा रखी थी हमारे LAC के ऊपर। बट ये अभी हुआ है, और आप इस पे आई थिंक निश्चित रहिए कि आने वाले वक्त में फिर चाइना कोई ना कोई एडवेंचर करेगा अलॉन्ग जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, क्योंकि चाइना ये चाहता है कि भारत हमेशा एक तरह से कहें ना अपनी टोस पे रहे, टेंटर हुक्स पे रहे, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी पे फोकस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, हमारी जॉब्स पे, जो सारी चीज़ देश की चीज़ें हैं, और उसके बदले हमारे को अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़े, हमारा खर्चा वहाँ ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। तो चाइना की ये स्ट्रैटेजी है एक तरह से भारत को नीचा रखने की। जी हाँ, राजनाथ जी ने जो बोला, हमारे सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब चाइना को दिया है, और ये गलवान में भी ये हुआ था। देखिए भारत की जो पॉलिसी है चाइना के साथ, हम शांति चाहते हैं, आई थिंक प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह सभी हमारे लीडर्स कहते हैं, और चाइना को हम ये कहते हैं, भाई जियो और जीने दो, वरना आप अगर हमें जीने नहीं देंगे तो गलवान में जैसे हमारे शहीदों ने अपनी जान दे दी, राइट, तो हम तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लड़ेंगे ना। तो चाइना को बार बार भारत का ये मैसेज है, जियो और जीने दो, वरना अब जैसे यांगसी में भी हुआ, ठीक है अगर शांति चल रही थी, बट अगर चाइनीज सोल्जर्स आए, उन्होंने घुसपैठ करी, तो फिर भारत तो उसको रिएक्ट करेगा ना। आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम आपको कैसे जीने देंगे। To get the result, we've been saying since many years. Even in 1987, when His Holiness propagate 5-point peace plan, His Holiness talks about Tibet making a zone of peace, and also Tibetan Plateau to be a demilitarized zone. So there are so many things which we felt that Tibetan Plateau has become heavily militarized. So the war game will not, if these circumstances or these things goes on, the war game will never end. And the Tibetan Plateau will always be the world's heaviest militarized zone. So it is for the sake of India as well as for China that they need to think deep to sustain friendship, equality, justice, and trust-based, right, lasting solutions. So therefore, China's belligerence cannot work, and it is not sustainable also. So therefore, as the crust is the Tibet's freedom is the issue. If the Tibetan freedom is granted, then the Tibetan Plateau will automatically be a zone of peace. Certainly, many people also think about, because when there was the COVID things happened, all attentions were on China. Then the Galwan crisis happened. Now, when there's a surge in COVID and when all the world attention was on China, then now the Taiwan issue is happening. So tactically, I think China is good in diverting their attentions to different when they had the hotspot of issues domestically. So I would certainly think that it might be one of the tactics which they are using it,
and it's not new also. Long awaited or expected, because whenever there is any revolt or any happenings in mainland China, to divert the feelings and the emotion of the Chinese, they always do something at the border. So it's not surprise for me. I mean, when such a big revolt from people coming out to the street, the college and university students and professors coming out and shouting for democracy, it's not a small thing. It's a very big thing, and Xi Jinping is trying to save his face by coming across the Tawang area to divert the whole issue towards border issue. So at home they have the monopoly of all the news and everything, and so they won't say that we have done this. They will say that India is doing it to China, and we have to be very careful. So there is danger from across the border, so why build tension inside? We have to focus at the border side. This is how China did during the 1962 war also, when they had the Great Famine and millions of Chinese died. Their intention was to divert that, and then saying Hindi Chini bye bye, they stepped India at the back in the 1962. The same case is, the history is repeating in itself, I would say. It is a tactic. ये तो चीन का tactic है. Yeah, this is the Chinese continuous intrusion in the Himalayan belt. So we, Tibetan activists, especially the Tibetan Youth Congress, over and again say that the permanent peace will only be happen when the Tibet issue is resolved. So India must focus on the Tibetan call for independence. Once the Tibet become independent, then there will be no border issue from Arunachal to Ladakh. Yeah, this is the China over and again to divert their own national issue. Right now there's a huge crisis in the mainland China. To divert the issue and to make this sense of nationalness towards the Han Chinese, they're creating problem in Himalayan belt, which is border to India, and they're extending their expansionist policy in Taiwan and other South China Sea.